हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम को लेके आए हैं। ये जो हम लोग का जो वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर्स में, उसमें स्टूडेंट्स को कभी फुल मार्क्स नहीं मिलता है। क्यों मिलता है? पता क्यों नहीं मिलता है? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जो है स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करता है। बहुत कम स्टेटमेंट यूज़ करके वो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको अच्छे से मार्क्स नहीं मिल रहा है। एंड जो स्टूडेंट्स है उसको एक चीज़ मैं बोलूँगा, आपको जो है ना हर एक आंसर स्टेटमेंट यूज़ करके लिखना है, ठीक है ना। जब आप लिख रहे हो कि a is equal to 2 and the question is asking the what is the value of a, just you have to write that the value of a is 2, okay na, just like that you have to write. Otherwise the teacher will not get any kind of impression to give you marks, because that is word problem section na. You have to use the statements more. The more you will use the statements, the more you will get marks. And obviously the answer should be correct. The answer you should make it correct. Otherwise how can the teacher will give marks? Okay na. And in the word problem section, number one is you have to use the statements. Number two is you have to follow the right process. If you are not following the process, just getting the answer correct or like doing the whole thing will not give you marks. Okay na. So I hope you will better remember it. Otherwise your marks will be reduced. Okay na. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे कि स्टूडेंट्स को मार्क्स ना मिलने का कारण क्या क्या है। और हम लोग का जो है नीचे देखिए आप लोग व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो एंड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो. In online class I can use I am using pen tab. Okay na, you just search it in Amazon. In Amazon you will get it, Huion pen tab, Huion pen tab. I am using that, and I have on my own laptop also. So in the online classes I can use Google Meet also. Okay na, I am using Google Meet. And just you can opt for that. Okay na. And if you like, just WhatsApp me in that number given in the video. And like I will tell you how to do a fast demo class, and the demo class will be always free. Okay na, free of cost. So first class is free of cost, and then after the classes, after the demo class, if you like it, then you can continue. There is no problem. Okay na. So and I am doing the offline classes also. Whoever is in Asansol or nearby Asansol area, they can opt for the offline classes also. And for the far away students, the online classes is the best. Okay na. So you can opt for online classes and just to do one class. I will assure you, like you will not miss it, you will not dislike it. Okay na, I am sure about that. Just opt for the first class, message me, and I will reply in WhatsApp. Okay na. Thank you so much. Hare Krishna.